Hello, dear students. I am Pinky, Assistant Professor of Psychology. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंसेशन किसे कहते हैं। तो सेंसेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंसेस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेंस। हमारे इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के उद्दीपक उपस्थित होते हैं। जब एक उद्दीपक किसी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करता है तो उस ना ज्ञानेंद्रिय में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति होती है। यह नर्व इम्पल्स सेंसरी नर्व से होता हुआ सीएनएस में जाता है और वहाँ पर अपना एक साधारण एवं इमीडिएट इफेक्ट छोड़ता है और इसे ही सेंसेशन का नाम दिया जाता है। अब आता है परसेप्शन। परसेप्शन अब हम किसे कहेंगे? परसेप्शन द प्रोसेस बाय विच sensory information is actively organized and interpreted by the brain. The process of selecting, organizing and interpreting raw sensory data into useful mental representation of the world. How sensation occur? जो हमारी सेंसेशन होती है उसको हम किस तरह से ऑक्योर करते हैं। तो आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग contain receptor cells. These receptor cells receive and process sensory information from the environment. Perceptual process क्या होती है और इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले सिलेक्शन refers to choosing which of many stimuli that will be processed. Second is organization, involves collecting the information into some pattern. Third, interpretation, involves understanding the pattern. अब आते हैं फैक्टर ऑफ परसेप्शन। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फैक्टर, सेकंड इज सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, इंटेंसिटी, द लाउडर ए साउंड द मोर लाइकली ए पर्सन इज टू परसीव इट. The brighter a light, the more likely it is to be in the focus of perception. Second is size. A full-page advertisement is more likely to be noticed than a half-column one. And last, distinct and striking. Distinct and striking things are perceived sooner than dull and unclear things. Last, moment. When things move suddenly in still and motionless in environment, it is quickly perceived. For example, birds sitting quietly on tree are not quickly perceived compared to ones about to fly. Next is novelty. A new and novel thing is perceived sooner than old and used things. Next, duration. Television and radio advertisement of longer duration are attended to more than those of short duration. Next, repetition. Repetition causes us to adapt to the repeated stimulus. Then, subjective factors.
Sometimes perception is determined not only by the physical characteristics of stimuli, but they but by the characteristics of the perceiver. These are means जो परसेप्शन होता है वो सिर्फ स्टिमुलस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो परसीवर होता है उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे प्रभावित होता है. फर्स्ट इज मोटिव एंड नीड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस, एज, preparatory set, social and cultural factors. तो मोटिव्स एंड नीड्स किस तरह से हमारे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं. When people are motivated, they tend to see and hear what they want to hear. In other words, we may be said to perceive the world in ways that agree with our motives and watch our goals. Second is interest and value. We attend to those aspects of world that relate to our interest. Next, past experience. Much of our daily activity is dependent upon past experience. We have learned to react to cues and symbols. For example, one scene a moving line on the sky. We guess it to be an airplane. Next is brings a change in perception as well. A child perceives things in different way as compared to a young person. Next, preparatory set. This refers to a person's readiness to respond to one kind of sensory input but not to other kinds. Next and last, social and cultural influence. The normal perceptual experience of a culture may lead its member to develop perceptual biases, suggestions and prejudice. Thank you so much.